So let's start with this simple topic. It's general principles and processes of isolation of elements. In short, it's metallurgy, extracting the metal from the ores. Now, first of all, why do we require extraction of metals? Most of the metals in nature do not exist in the free state. They exist in the combined form. Mainly the metal exists in the form of oxides, sulfides. That's the reason group 16 was named as chalcogens, ore forming elements, because most of the metal either oxide होते हैं या sulfides होते हैं. उसके अलावा the uncommon forms are carbonates, nitrates, phosphates, silicates. ये भी combined form में existence रहता है. बराबर. There are few of the metals which exist in the free state, which are called noble metals. And when I talk about noble या non-reactive metals, we are thinking about gold, platinum. Silver is quite reactive because it gets tarnished in air. ठीक है? Mercury. So silver and copper, they are actually less reactive metals, and this is also confirmed from the electrochemical series. Ag, Hg, Cu are above the SHE and बाकी सारे SHE के नीचे हैं. बराबर. So since most of the metals exist in the combined form, we need to extract them from the ores. ठीक है? Now firstly, we need to understand the difference between minerals and ores. Minerals are naturally occurring substances which will contain the metal either in the combined state or in the free state. Remember, the free state is also called as native state. Just another name for the free state, it is also called native state. तो सारे naturally occurring substances which are obtained by mining करके जो naturally occurring substances होते हैं which would contain the metal either in the combined form or free state, they are called minerals. जैसे you can observe that all these are minerals of iron. They are all minerals, मतलब they are obtained naturally by mining process. ठीक है? पहले formulas देख लेते हैं, then we'll come to the concept. Hematite is a mineral having the formula Fe2O3. It's an oxide mineral. Limonite is also an oxide, but it is hydrated. मतलब Fe2O3 dot 3H2O, hydrated mineral है. Siderite is the carbonate mineral, which is FeCO3. Pyrites refer to sulfides, and iron pyrites is FeS2, which is also famously referred as fool's gold. We had used this in the preparation of sulfur dioxide. वहाँ पर बताया था fool's gold. एक और चीज बताया था, FeS2 में S का oxidation state is -1. FeS2 में sulfide is similar to peroxide. That is why the oxidation state is -1. काफी important था ये. And magnetite should be well known. It's a mixed oxide Fe3O4, which is FeO.Fe2O3. Mixed oxide है ये. बराबर. So these are all naturally occurring substances which contain the metal ion in the combined form. ठीक है? अब इन सब से हम metal को extract कर सकते हैं. So let's say from all the minerals I extracted Fe. बराबर. But the amount or the extent to which iron gets extracted will not be same in all the cases. So let's say from limonite I get 40% of iron. Hypothetical values है. From siderite I would get 50%. यहाँ पे मुझे मिला 55%. Here I got 65%, and here I got 85% of iron. So industrially, which I will select for the extraction? Of course, hematite, because hematite contains higher percentage of iron. So while extraction, I'll get the higher percentage of iron from it. बराबर. So this mineral now will be called as an ore. समझा? मतलब सारे minerals ores नहीं होते हैं, but all ores are definitely the minerals.
तो एक मेटल के मल्टीपल मिनरल्स हो सकते हैं, बट और कोई एक ही होता है जिसमें से मेटल इज प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड. So listen to the definitions. Minerals are naturally occurring substances in the earth's crust which is obtained by mining, which would contain metal either in the combined form or in the free state, that is native state. Ore is a mineral. The ore is a mineral from which the metal is profitably extracted to a greater percentage. Correct? Now, when you obtain the mineral from mining, then there are also some earthy impurities. Those earthy or sandy impurities are called gangue, which needs to be removed so that we get the pure ore. ठीक है? And the process by which the metal is extracted is simply referred as metallurgy. Correct? Now there are three main types of metallurgical processes. They are pyrometallurgy, hydrometallurgy and electrometallurgy. नाम में ही तीनों का कॉन्सेप्ट है. Pyro refers to fire, that is heat. Hydro, water. Electrolysis. बराबर. Now pyrometallurgy is the process of extracting the metal by heating to a high temperature and using a suitable reducing agent. बिकॉज किसी भी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट वी रिक्वायर अ रिड्यूसिंग एजेंट. हाइड्रोमेटलर्जी में से द एक्सट्रैक्शन वुड बी डन बाय डिसॉल्विंग द ओर इन वाटर, मीनिंग फ्रॉम इट्स एक्वियस सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोमेटलर्जी में बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मोल्टन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है? अब कौन सा प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. If I have highly reactive metals like the S block metals, by which metallurgical processes they are extracted? Electrolysis. मतलब for S block का metals we apply electrometallurgy. Hydrometallurgy is used for native metals, यानी noble metals, that is silver, gold, इनके लिए. एंड जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, मेनली द ट्रांजिशन मेटल्स लाइक जिंक, कॉपर, आयरन, दे आर ऑल एक्सट्रैक्टेड बाय पायरोमेटलर्जी. समझा? तो ऑन द फर्स्ट पेज यू कैन सी द थ्री टाइप्स ऑफ मेटलर्जी, डेफिनेशंस आर गिवन. ठीक है? सो वहीं पे साइड में लिख लो पायरो यूज्ड फॉर लेस एक्टिव मेटल्स. वो इंपॉर्टेंट है कौन सा, किसके लिए. Used for less active metals like ZnCuFe. Hydro used for noble metals like AgAu, and electro used for highly active metals like S block. Highly active metals like S block. ठीक है? On the second page you can see the list of metals, their minerals and the ores. They are to be remembered. So first part iron I have already discussed. Next में you can see zinc. Zinc के minerals are zinc blend, which is ZnS. Blend is referred as sulfide, and that's why zinc blend would be ZnS. Zincite is the oxide of zinc, that is ZnO. Calamine is a carbonate ore. बहुत बार इतना ही पूछ लेते हैं, कैलेमाइन इज डैश ओर ऑफ जिंक, इट्स अ कार्बोनेट ओर. इसलिए मैं वही वर्ड्स बता रहा हूं आपको. कैलेमाइन इज कार्बोनेट ओर, दैट इज कार्बोनेट मिनरल रादर, दैट इज ZnCO3. विलेमाइट इज सिलिकेट एंड द फॉर्मूला इज Zn2SiO4. A profitable extraction is done from zinc blend, hence it becomes an ore. ठीक है? नेक्स्ट मैग्नीशियम. The first one is magnesite. Magnesite is MgCO3, carbonate है. Dolomite, if you look at the formula, it's a double salt. Very good. MgCO3 dot CaCO3. Double salt I had discussed when I had started with coordination compounds. ठीक है? Simple salts, double salts, complexes. Simple salts मतलब NaCl.
डबल सॉल्ट मतलब डॉट सेपरेटेड, एंड कॉम्प्लेक्सेस मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, बराबर। उसके बाद मैग्नीशियम में एप्सम सॉल्ट शुड बी वेल नोन, MgSO4.7H2O, हाइड्रेटेड सल्फेट है वो। उसके बाद कार्नलाइट, कार्नलाइट इज अ क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, सो अगेन इट्स अ डबल सॉल्ट ऑफ KCl, MgCl2.6H2O, ये नंबर भी याद रखना है, .6H2O। देन वी हैव अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल इज बॉक्साइट, Al2O3.2H2O, which itself is also the ore of aluminium. Next, cryolite, Na3Al(F6), and then we have kaolinite या China clay. If you observe, it's a silicate ore, silicate oxide दोनों है, इसलिए फॉर्मूला देखो Al2O3.2SiO2.2H2O, सिलिकेट भी है, हाइड्रेटेड भी है, ऑक्साइड भी है, कंबाइंड है पूरा, Al2O3.2SiO2.2H2O. Clear? Okay. Now, to extract the metal from the ore, there are few metallurgical processes which are required. So once we extract the ore from the mining process, that will contain many of the earthy impurities. So those impurities need to be separated and the ore needs to be concentrated. Matlab there should be high concentration of the ore and low concentration of the impurities. Hence the first process in metallurgy is called concentration of ore. Once you concentrate the ore, secondly it needs to be reduced by using a reducing agent. अब रिडक्शन करने के बाद आपका जो ऑक्साइड वाला ओर है वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट हियर ऑल्सो विल नॉट गेट 100% प्योर मेटल बिकॉज इट वुड कंटेन सम impurities which need to be refined. Hence the next step would be refining. तो तीन common metallurgical process for any extraction would be concentration, फिर reduction and then refining. समझा? बीच में एक और देखोगे रोस्टिंग या कैल्सिनेशन, वो सबके लिए नहीं लगता है. When I discuss the detail, I'll come to the conclusion. ठीक है? अब let's start with concentration. Concentration of the ore is also called as ore dressing. Ore dressing या फिर it is also called benefaction. Just alternate names are important. सब दिए हुए हैं. Just refer to it. Concentration of ore is called ore dressing या फिर it is called as benefaction of ore. ठीक है? अब concentration में 5 अलग अलग processes हैं. कौन से ओर के लिए कौन सा प्रोसेस लगता है उसका भी प्रिंसिपल या फिर रीजन आपको समझना आना चाहिए. ठीक है? द फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन प्रोसेस इज हाइड्रोलिक वॉशिंग. नाम से समझ में आता है हाइड्रोलिक रिफर्स टू वाटर, सो द ओर इज वॉश्ड विद वाटर. ठीक है? सो इस केस में जो इंप्योरिटीज रहती है दे नीड टू बी लाइटर देन द ओर पार्टिकल्स. द गैंग or the impurities need to be lighter. If the gang or the impurities are lighter, they can be easily washed off with water, and ore being heavier they will settle down. Samjha? So now this hydraulic washing is done by using Wilfi's table. अब Wilfi's table का arrangement क्या हुआ है? Just understand. In the Wilfi's table, first of all the pulverized ore. Pulverized का मतलब होता है powdered ore. The ore need to be crushed. The ore need to be crushed. ठीक है? So the powdered ore is fed from the top to the slanting floor of the Wilfi's table, which is having full fixed wooden strips. ये क्या है? Fixed wooden strips. और ये continuously vibrate होते रहता है. तो अब क्या हो रहा है? Powdered ore ऊपर से डाला. The inlet of water is continuously supplied. ना वाटर के साथ जो भी इसके लाइटर पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे करके सब निकल जाएंगे. एंड एट द बॉटम व्हाट वी कलेक्ट ओवर हियर इज गैंग. ऑल द लाइटर इंप्योरिटीज विल बी नाउ सेपरेटेड विथ वाटर. और जो भी हेवियर पार्टिकल्स है द वाइट वंस व्हिच यू कैन ऑब्जर्व ऑन द फिक्स्ड वुडन स्ट्रिप्स, नाउ दे आर ओर पार्टिकल्स व्हिच आर सेटल्ड डाउन. सो दिस वे थ्रू द हाइड्रोलिक वॉशिंग वी separate the
gang or impurities. समझा? So the principle of hydraulic washing is the difference in specific gravities of the ore and gang. Specific gravity is other name for डेंसिटी. बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी. सो व्हेन देयर इज डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ओर एंड द गैंग पार्टिकल्स वी विल यूज हाइड्रोलिक वॉशिंग यूजिंग विल्फीज टेबल. ठीक है. सिमिलर एक और प्रोसेस है विच इज कॉल्ड हाइड्रोलिक क्लासिफायर. कॉन्सेप्ट सेम है, खाली अरेंजमेंट अलग है. यहां पर फ्रॉम द हॉपर the powdered ore is fed to a large conical reservoir which is filled with water, and the water here is supplied from the bottom part. ठीक है. तो दो इनलेट्स है, one for the powdered ore via the hopper and one for the water from the bottom. ठीक है. अब क्या होगा, a very fine और high pressure of water is supplied from the bottom. ठीक है. और powdered ore ऊपर से आ रहा है. अब वाटर के प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो भी लाइटर पार्टिकल्स हैं दे विल ऑल गेट सेपरेटेड, और ऊपर आकर फाइनली यहाँ पर एक आउटलेट दिया गया है, तो वाटर के साथ साथ ऑल द लाइटर पार्टिकल्स विल गेट सेपरेटेड आउट. सो दिस विल बी गैंग विच विल बी रिमूव्ड, एंड नाउ द ओर विच इज वाज हेवियर पार्टिकल विल गेट सेटल डाउन. तो यहाँ पर ये पूरा क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर का सेपरेशन. समझा? So the powdered ore is fed via the hopper. There is an inlet from which the water is fed from the bottom. Because of the pressure of the water, the lighter particles separates out from the top outlet जो दिया हुआ है, and the heavier particle settles down in the bottom. ठीक है. Now since the heavier particles are settling down at the bottom due to gravity, this process is also called gravity separation method. This is also called levitation. Levitation is other name for gravity separation. तो overall hydraulic classifier, gravity separation, levitation is same. ठीक है. This type of process is used for oxides and carbonates. मतलब अगर हमारा ore oxide या carbonate हो तो फिर we generally use the hydraulic washing या hydraulic classifier method. समझा? ठीक है. Next, magnetic separation. There are few of the ores which are also containing iron or the magnetic particles. तो ऐसे केसेस में सेपरेशन करने के लिए we use this method called magnetic separation. बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट है. Here we take a roller on which the leather belt is attached. ये क्या है आपका leather belt. अब उस leather belt के थ्रू दो rollers को फिट किया गया है, आउट ऑफ विच वन इज मैग्नेटिक रोलर एंड अदर विल बी नॉन मैग्नेटिक. वंस अगेन द पाउडर्ड ओर इज फेड फ्रॉम द टॉप वाया द हॉपर. ठीक है. अब जैसे जैसे ये पाउडर्ड पार्टिकल्स यहां पर होगा, दिस लेदर बेल्ट कीप्स ऑन मूविंग थ्रू द रोलर्स. ये डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं, बराबर. अब जैसे जैसे मूवमेंट होगा, ओवर हियर द मैग्नेटिक रोलर वुड अट्रैक्ट द मैग्नेटिक पार्टिकल्स and the non-magnetic particles will be pushed away from there. मतलब अब these particles which are collected in this container are non-magnetic, and जो दूसरे container में collect हो रहे हैं they are magnetic. This is how we separate the magnetic components from the non-magnetic components by magnetic separation method. समझा? अब इसका एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है. There is an ore of tin which is called tin stone. टिन का ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? टिन स्टोन. अब इस ओर में there are magnetic components of iron and manganese in the form of tungstate. In the form of tungstate. Tungstate मतलब टंगस्टन का सॉल्ट, यानी WO4 अनायन के फॉर्म में. तो आयन टंगस्टेट वुड बी FeWO4. टंगस्टन का सिंबल इज W. ठीक है. एंड मैंगनीज का टंगस्टेट वुड बी MnWO4. बराबर. सो आई हैव द टिन स्टोन एज माई ओर विच कंटेन सम मैग्नेटिक पार्टिकल्स विच आई वांट टू separate. So the powdered ore of this would be fed on this leather belt.
अब यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक पार्ट है वो सब कलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, मतलब FeWO4 एंड MnWO4 will get collected in this and SnO2 जो है that will be collected in this container which would not have any magnetic component. Clear? तो कौन सा प्रोसेस किसके लिए यूज हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वाया MCQ ये पूछा जाता है, ठीक है. नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस कॉल्ड फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. Firstly, the froth flotation process is employed for sulfide ores. जैसे most common example zinc blend. तो zinc blend is the ore of zinc which is a sulfide ore. बराबर. अब फ्रॉथ फ्लोटेशन में कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल क्या है पहले वो समझ लेते हैं. The sulfide ores generally contain the impurities which are denser as compared to sulfide. अब तक हम क्या कर रहे थे डिस्कस कि जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो लाइटर होते हैं तो पानी के साथ निकल जाएंगे. इस केस में हम हाइड्रोलिक वॉशिंग या हाइड्रोलिक क्लासिफायर यूज नहीं कर सकते, मैग्नेटिक सेपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई मैग्नेटिक कंपोनेंट्स नहीं है सेपरेट करने के लिए. बराबर. तो एक नया कॉन्सेंट्रेशन का मेथड रिक्वायर्ड था. बराबर. क्यों रिक्वायर्ड था, बिकॉज इसमें जो गैंग पार्टिकल्स हैं दे आर हेवियर देन द सल्फाइड पार्टिकल्स. बराबर. सो इट इज एम्प्लॉयड फॉर द सल्फाइड ओर्स इन विच द गैंग पार्टिकल्स आर हेवियर. ठीक है. नाउ व्हाट इज डन ओवर हियर इज the sulfide particles are mixed with water containing some oily substance like pine oil. अब यहाँ पे कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, पाइन ऑयल है, यूकलिप्टस ऑयल है या फैटी एसिड्स के जो कंपोनेंट्स हैं which are oily they can be used. ठीक है. So water containing the powdered ore is mixed with the pine oil. अब फंडा क्या है ऑयल यूज करने का, जो सल्फाइड के पार्टिकल्स हैं they can easily stick through the oil, surface of the oil. ठीक है. और जो इसके impurities है they can get easily wetted by water. बराबर. The principle of froth flotation is the sulfide particles are wetted by oil and the impurities are wetted by water. अब इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग चीज को वेट हो गया है. बराबर. ठीक है. अब हाउ डू वी कॉन्सेंट्रेट द सल्फाइड ओर. So we take a large container once again here in which the water, pine oil and the powdered ore is mixed. Then there is a rotator or agitator which is passed with the compressed air. अब ये क्या करेगा, this will work like washing machine. ठीक है. washing machine में we put detergent and then the water is added and then when the drum rotates what happens, it creates a froth. झाग क्रिएट करता है. बराबर. एंड फ्रॉथ पानी के कंपैरिजन में लाइटर होता है इसलिए ऊपर की तरफ सेटल होगा. समझा. सो दैट इज द रीजन इट रिक्वायर्स द एजिटेटर सो दैट वाटर, ऑयल एंड द पाउडर्ड ओर व्हिच इज एडेड इट फॉर्म्स अ फ्रॉथ. अब फ्रॉथ जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑयल व्हिच इज प्रेजेंट. सो ऑयल के साथ कौन से पार्टिकल्स थे, सल्फाइड के. तो यहां पर देखो ये डॉटेड वंस इन द फ्रॉथ आर सल्फाइड पार्टिकल्स एंड जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो हेवियर थे तो कहां जाएंगे, वे सेटल डाउन एट द बॉटम. अब ये फ्रॉथ में जो सल्फाइड पार्टिकल्स हैं दैट कैन बी स्किम्ड ऑफ और सेपरेटेड फ्रॉम द गैंग एंड दिस इज द फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. सिंपल. प्रिंसिपल क्या है वो याद रखना है. व्हाट इज द प्रिंसिपल, द सल्फाइड पार्टिकल्स आर वेटेड बाय oil and the gang particles are wetted by water. The gang particles are heavier than the sulfide particles. So because they are wetted by oil, they form a froth at the top and the gang settle down at the bottom. खत्म. ठीक है. अब इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम भी आ सकता है. There are few of the sulfide ores which contain double sulfides. जैसे galena is an ore of lead and the formula is PbS. अब PbS के अंदर ZnS भी प्रेजेंट होता है. गलेना जब एक्सट्रैक्ट करते हैं it also contains ZnS. So if you remove by the froth flotation process PbS and ZnS दोनों concentrate हो जाएगा. But what I want is PbS and unwanted part अब क्या है,
ZnS. अब this unwanted part is removed by using a substance called depressant. क्या बोलते हैं? Depressant. ठीक है, तो ZnS actually is reacted with the NaCN. Concept क्या है? The cyno here acts as the ligand and the Zn acts as the transition metal ion, so they can form a complex. बराबर, तो ये complexation बहुत ज्यादा spontaneous होता है. अब होगा क्या? It forms a complex which is Na2ZnCN4. It forms a complex which is Na2ZnCN4. और खास बात क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, this gets adsorbed on the surface of the sulfide. मतलब ZnS के जो सल्फाइड के पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर जाकर वो एड्सॉर्ब हो जाते हैं और ये कॉम्प्लेक्सेस पानी में डिसॉल्व कर जाते हैं. तो अब क्या होगा? When I take galena with PbS and ZnS along with the depressant, that is NaCN, what will happen? The ZnS only will react with NaCN, PbS unreacted रहेगा and it will convert the ZnS into the complex which is soluble in water. तो अब यहाँ पर ZnS के जो particles हैं they will remain in the water and जो PbS का particles हैं they will come in the form of the froth and that can be separated. So the concept of the depressant in froth flotation process is important and most important example being galena PbS के लिए. समझा? And the last process is concentration का leaching. अब leaching कब यूज करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है? There are some ores in which the impurities do not dissolve in a particular solvent, but जो wanted particle है यानी ore वो solvent में dissolve कर जाता है. मतलब depending on the difference in solubility leaching is used. तो leaching कब यूज करते हैं? What is the principle? When there is a difference in solubilities of the ore and the gangue. समझा? तो आप प्रिंसिपल देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? Leaching is used whenever we want to extract a soluble material from an insoluble solid by dissolving it in a suitable solvent. Leaching is employed to extract a soluble material from the insoluble solid by dissolving it in a suitable solvent. Correct? तो लीचिंग का मेन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मेन प्रिंसिपल क्या है? सॉरी, डिफरेंस इन सल्यूबिलिटी. ठीक है, यहां पर क्या था? डिफरेंस इन डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटीज दोनों के लिए. डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर एंड द गैंग. क्लियर? डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज. अंडरस्टैंड द वर्ड, यही एमसीक्यू में पूछते हैं. और यहाँ डिफरेंस क्या है? सल्यूबिलिटीज का. ठीक है, मेन कीवर्ड्स ध्यान रखो. हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक क्लासिफायर, बोथ मेन प्रिंसिपल डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी, डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज, डिफरेंस इन सल्यूबिलिटीज. और ऑब्वियसली हम कंपेयर कर रहे हैं ओर वर्सेस गैंग हर बार. समझा? नेक्स्ट, लीचिंग जो है दैट इज जनरली यूज्ड फॉर नेटिव मेटल्स which exist in the free state, generally for silver and gold. It is also used to leach alumina from bauxite. Alumina from bauxite. अब कैसे लीचिंग होता है उस प्रोसेस को समझते हैं. Here the silver or gold which is represented by M is dissolved in water to form its aqueous solution that is dissolved in the solvent of cyanide NaCN में. And there is oxygen used as an oxidizer. क्या क्या raw materials या reactants है? Just observe. The metal is dissolved in water to form its aqueous solution, and then it is mixed in Cn minus, which acts as the solvent, and then it is oxidized with atmospheric oxygen, यानी O2. बराबर? तो अब यहाँ पर the metal, which is again a transition metal, with the cyanide can form a complex. बराबर? Now if you know silver and gold have a coordination number
2. So the complex which is formed is MCN twice and the overall charge of -1. So complexes में मैंने हर बार बोला हुआ है, never mug up the formula. आपको सब अगर पता है तो आप डायरेक्टली उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर सकते हो. जैसे M कोऑर्डिनेशन नंबर समझा 2 तो MCN ट्वाइस. ये +1 है, ये -2 है, तो चार्ज क्या आया -1 प्लस द OH माइनस इज द एलिमिनेटेड अल्कलाइन फॉर्म. ठीक है. अब ये कॉम्प्लेक्स में इफ आई हैव अ मेटल लाइक सिल्वर एंड गोल्ड, इफ आई वांट टू सेपरेट इट आई कैन यूज अ एक्टिव मेटल like zinc because it can displace. Now going back to electrochemistry, the rule of displacement is lower displaces upper. और सिल्वर गोल्ड तो पता है SHE के ऊपर है, तो उसके नीचे जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं उन सब को हम यूज कर सकते हैं. What we have used over here as example is zinc. So now can zinc displace M? Yes. तो अब जिंक का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा with a coordination number 4 as ZnCN4 2-, जो यहां पर भी बना था, बराबर. एंड अब मेटल क्या हो गया, सेपरेट. क्लियर. इनफैक्ट दिस एंटायर प्रोसेस इटसेल्फ इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी. हाइड्रोमेटलर्जी में मैंने क्या बोला था, वी एक्सट्रैक्ट द मेटल बाय डिसॉल्विंग इट इन वाटर टू फॉर्म इट्स aqueous solution. So this leaching for silver and gold itself is example of hydrometallurgy. समझा? क्योंकि ये मेटल तो फ्री स्टेट में ही है ना, कंबाइंड फॉर्म में है ही नहीं, तो हाइड्रोमेटलर्जी के थ्रू हमने उसको साइनाइड में डिसॉल्व किया. जो इम्प्योरिटीज थी वो साइनाइड में डिसॉल्व होगी क्या, नहीं, वही तो डिफरेंस था ना. तो ऑल दैट इम्प्योरिटीज विल गो अवे बिकॉज इट डजंट डिसॉल्व इन साइनाइड सॉल्वेंट. क्लियर. Next, bauxite. What is bauxite? Al2O3.2H2O. That would contain many impurities. अब उसको concentrate करने के लिए हम dissolve करते हैं एक solvent में. And the two types of solvents which are used over here are NaOH caustic soda और Na2CO3 washing soda. ठीक है. दोनों में पूरा concept same है, बस the name associated process changes. When we use NaOH, it is famously called Bayer's process. It's called Bayer's process. When you use Na2CO3, it is called Hall's process. Bayer's NaOH, Hall's Na2CO3. Bayer's NaOH, Hall's Na2CO3. A very important information. Is it the same part from Hall Herol? No, that is for the refining of aluminium. Hall Herol अलग है. ये कॉन्सेंट्रेशन मेथड है, वो रिफाइनिंग मेथड है. ठीक है. बट द हॉल साइंटिस्ट इन हॉल हेरोल थे सेम. ओके. सो फॉर अलुमिना फ्रॉम बॉक्साइट में, बॉक्साइट इज Al2O3.2H2O. इट इज फाउंड दैट इट इज सोल्यूबल इन NaOH और उसके साथ एसोसिएटेड जो इंप्योरिटीज है वो इनसोल्यूबल है. समझा कॉन्सेप्ट? ये लीचिंग का मेन प्रिंसिपल है. अब कॉन्सेप्ट क्या है, फंडा देखो. अल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, वी नो इट कैन डिसॉल्व इन एसिड एज वेल एज बेस, इसीलिए हम NaOH यूज करते हैं. एंड व्हेन अल्यूमिनियम इज डिसॉल्व्ड इन बेस इट फॉर्म्स अ फेमस sodium meta-aluminate which is having a formula NaAlO2, and this NaAlO2 formed is soluble, बाकी सारी impurities insoluble, separate out हो गई, concentrate हो गया. और समझा? अब NaAlO2 is further dissolved in water, मतलब continuation of the first step only. When the meta-aluminates are dissolved in water, it forms the hydroxide, and NaOH gets regenerated. Then the AlOH thrice is ignited, heated to a high temperature to form alumina and water. So the bauxite में जो alumina था वो कैसा था? Impure. हमने Al2O3 को लीच किया, मतलब सेपरेट किया by dissolving it in NaOH. So what alumina we get over here is pure and it is concentrated now. समझा? So this is Bayer's process. अब इसी में if I use Na2CO3 then this product is same, just the byproduct will be H2
CO2 क्योंकि कार्बोनेट है। नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यूएशन में NaAlO2 plus H2O plus CO2 gives you AlOH thrice plus Na2CO3 now gets regenerated and finally दोनों स्टेप्स के लिए at the end देखो AlOH thrice ignite किया to get Al2O3 plus H2O खत्म। तो मेन MCQ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है? बेयर्स प्रोसेस के लिए NaOH यूज करते हैं एंड हॉल्स प्रोसेस के लिए Na2CO3। सो दीज आर 5 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स। समझा?